let us start with the concept of Johari window. Yes. So, if we see today what all we will be doing in today's lecture, we'll be discussing the concept of Johari window, and also how this particular tool, the tool of Johari window, how the tool is used for self-awareness and for team building. So, this is basically a tool which will help us understand our personality. There can be different personalities related with these, like understanding when we try to understand it through this tool named Johari window, and how we can improve, make improvements there. That is also we can discuss here with this tool. So how this name of Johari window, how did this name come up? Johari name that came up because of the two people who had who have devised this tool. So this tool is devised by American psychologists Joseph Luft and Harry Ingham in the year 1955. So Joseph Luft and Harry Ingham. If you see the first few letters, so Johari ka Jo has come from Joseph, and Harry. From Harry, the word Hari has come. So Johari window. That is what the word came up. Like this tool's name came from. So this has come from the two people who had devised this tool. Why window? You will understand this very clearly when we'll be discussing this, because this tool takes understands anybody's personality with the help of a kind of a window that has four panes. All right, so that is why you'll be able to understand once we see the how this tool works. Okay, so that is how this name came up, because the psychologists Joseph Luft and Harry Ingham. Then it is also referred to as a disclosure feedback model of self-awareness. The disclosure feedback model of self-awareness. Now, why is it called the disclosure and feedback model? That also you'll understand very well when we'll be discussing the model, because it takes care of self-disclosure and feedback from the others in order to make a shift in the window. So you'll understand this thing once we'll be discussing what this model is all about. So again, Johari window, the name because of Joseph Luft and Harry Ingham, the first few letters of both these psychologists who devised this, and then also it is known by the name of disclosure feedback model. So that is what you need to know about the name of this particular tool. Now, what is it? What is the Johari window? Let's try to understand that. So first of all, let us understand that this is a tool used for illustrating and improving self-awareness and mutual understanding between individuals within a group. So those individuals who are working within a group, how can their understanding improve, or in order to understand how these people within a group or within a team, how much do they know each other, or how you can increase that level of knowledge about each other. All this is through this tool, right? And it is also a method of improving self-awareness. So self-awareness or awareness about yourself, that can be improved with the help of this tool, and that definitely makes an impact in your personality. They're especially relevant due to modern emphasis on and influence of soft skills, behavior, empathy, cooperation, intergroup development, and interpersonal development. So this is especially useful. The Johari tool is, or Johari window tool is especially useful because nowadays there is a lot of emphasis on the soft skills part, right? The hard skills are the technical knowledge that you have, the domain specific knowledge that you have, whereas the soft skills are the skills related with how do you deal with people, how do you work in a team, and how well you gel with the people. So these skills are nowadays seen a lot, are found to be very, very important. That's why the Johari window is considered to be quite important tool nowadays. Many organizations use this tool in order to create better understanding between team members. Right. So what is this window? Basically, the window is the Johari window represents information. Let me just put the annotation on so that things might become a little clearer to you. Yes, so the Johari window represents information, feelings, experience, views, attitudes, skills, intentions, motivation, etc., within or about a person in relation to the group from four perspectives, right? If you read this, you'll get confused. I know that you will get confused when you are reading this, but the same, everything, this all becomes very clear when you see the window in front of you, when you see how it works, right? So this basically Johari window, that will be representing some kind of an information, and that information will be what? That will be some kind of like what kind of experience you have, or views you have. So
basically information related to different characteristics of your personality within or about a person. So that the information which is there within a person or about a person, which the others know in relation to their group. So your characteristics, your personality characteristics in relation to the group in which you are. So how much do you know yourself, and how much does the group, the other members of the group, know you? Right? This is Johari Window talks about that from four different perspectives. And what are these four different perspectives? These will be considered the four regions. So these perspectives are called the regions or the areas of the quadrants of the window personality from four perspectives. And these are those four perspectives, right? If you see these four panes of the window, it is like a window which has four different panes. So four panes of the window are what are shown in this Johari window. So let us try to understand these four quadrants. This part is very, very important. Okay, before we move on to this is the standard representation of the Johari window model, where each quadrant is of the same size. राइट नॉर्मली एक जोहारी विंडो को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें चारों क्वाड्रेंट्स का साइज सेम है राइट चारों क्वाड्रेंट्स मतलब ये जो चारों आपको विंडो पेन्स दिखाई दे रहे हैं उनका साइज सेम होता है ओके नाउ व्हाट आर दीज एंड व्हाट डज एक्चुअली दिस denote. Let us try to understand that. Now if you see here, it is written known to self, known to others, right? Unknown to self and unknown to others, right? So one side shows known to others, unknown to others. The other side shows known to self and unknown to self. Okay, so what are these? What is known to self, known to others, or unknown to others? These are your characteristics, the characteristics of your personality. Okay, so those characteristics of your personality which are known to self and known to others, both, are these characteristics come up in the open or the free area, right? So everybody's personality is made up of a number of characteristics. And so all people, like the characteristics of your personality, some part of it you will be knowing, right? Aapko pata hai you know very well about yourself, and others also know that very well, राइट जैसे अगर सपोज आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं आपको भी पता है आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और क्योंकि वो आपके बिहेवियर में झलकता है तो ये दूसरों को भी पता चल जाता है कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो so इसलिए being short tempered is that aspect of your personality which is known to self and known to others also. That becomes a part of open area or the free area, right? So everybody's personality has some aspects or some characteristics which belong to the open area. Okay, so this is clear, I think, to you people. Now, there are certain areas which are considered to be certain characteristics which belong to the blind area. Now, what are these? These are unknown to self and known to others. Try to understand. These are those aspects of your personality which are unknown to you yourself. आपको नहीं पता कि आपकी पर्सनालिटी के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लेकिन दूसरे ये समझते हैं दूसरों को दिखाई देता है ऐसे बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि आपको खुद नहीं जैसे इफ आई जस्ट गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल यू माइट बी हैविंग मेनी फ्रेंड्स और सम पीपल यू मे बी नोइंग हु आर लिटरली वेरी वेरी इरिटेटिंग right? And these people do not know that they are so irritating. So they do not find that irritating part of their personality in themselves, but the others find it, right? So that aspect of their personality, they do not know, but the others know about it. So that becomes a part of the blind area. And it's not always about some wrong things. कुछ गलत चीज़ें हैं वो ही blind area का part है ऐसा ज़रूरी नहीं है कई सारे आपके ऐसे talents होते हैं जो आप खुद नहीं समझ पाते पर कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई teacher आपसे कहता है बेटा you can do this better why don't you try this so you do not know about it you have not been able to actually judge within yourself that you may be good in this but your teacher or some friend of yours or maybe some like your parent might tell you that you may be good at this why don't you try this and then you try your hand at that thing and you really are good at that so there are aspects of your personality which you may not be knowing but the others are able to see that becomes a part of blind area why it is called blind because a blind person cannot see himself but the others can see him na so that is why this becomes a part of blind area yes Hemish yes you have some question. Miss, you said that in blind area, the person himself doesn't know about his characteristics Yes, and yes. others know. So after others tell him about his characteristics, Then it does becomes a that part of then open area.
So then there is no blind area. Yes, then that becomes a part of those characteristics become a part of open area. Then open area increases in size and blind area decreases. But you said that all the quadrants are equal. That is what I said. This is the standard representation of the Johari window, but the different, you can say the different areas, they will keep. अभी जब हम आगे चलेंगे तब आप देखो कैसे हमको different areas हम आगे पीछे कर सकते हैं. That means our aim will be कि हम open area बड़ा रखें. कोई भी टीम Okay. अच्छी तब होती है जब ओपन एरिया बढ़ता चला जाता है और ब्लाइंड एरिया, हिडन एरिया, अननोन एरियाज कम होते चले जाते हैं. सो आवर एम इज दैट मींस दीज, व्हाट डिड आई से, दिस इज द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जोहारी विंडो मॉडल वेयर ईच क्वाड्रेंट इज ऑफ द सेम साइज. दिस इज स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन. लेकिन जैसे जैसे टीम में या जैसे जैसे आप लोगों को समझने लगते हो टीम में, वैसे वैसे आपकी डिफरेंट विंडोज साइज बदलती हैं. राइट. सो दैट Okay. इज व्हाट वील बी डिस्कसिंग नाउ. इसके बाद जब हम बात Okay. करेंगे अभी ये स्टैंडर्ड कि ये एक्चुअली जोहारी विंडो है क्या, दैट इज व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग नाउ. कि ओपन एरिया किस चीज पे से डील करता है, ब्लाइंड एरिया कौन से एस्पेक्ट से डील करता है, एंड डिफरेंट एरियाज क्या क्या एस्पेक्ट्स बताते हैं. दैट इज व्हाट वील बी डिस्कसिंग राइट नाउ. एंड जस्ट आफ्टर दैट, वंस वी आर क्लियर विद व्हाट ऑल दीज पेन्स आर, व्हाट दीज एरियाज आर, देन वील मूव ऑन टू हाउ कैन वी reduce some area and increase the size of some area. That we'll be discussing. So blind area वो characteristics हैं आपके जो आप नहीं जानते, दूसरे आपके बारे में जानते हैं. Right? So that becomes blind area. Always remember क्यों ये blind, क्योंकि blind person अपने बारे में अपने को नहीं देख सकता. अपने बारे में जानता है लेकिन अपने को देख नहीं सकता, दूसरे उसको देख सकते हैं. That's why this is known as a blind area. Now coming to the hidden area. Hidden area is known to self. Now see this hidden area, अगर आप vertically देखें तो known to self but unknown to others. So those aspects of your personality which you know very well about yourself, but the others do not know about it. So you have been able to hide those areas from the others. Okay. Now many of us have many of the characteristics or many of the intentions that we have, many desires, some secret desires which we may be having, some of our ambitions that we may be having which we don't want to disclose because we feel that people may make fun of us or things like that. So कई सारी ऐसी चीजें जो आपको पता है आपकी, या फिर कई फोबियाज हैं आपके जो आप नहीं आप ये नहीं चाहते हो कि दूसरों को पता चले. So such things which you know about yourself, you may be very nervous but you don't want to disclose it to the others, right? And you try to show off that you are not nervous at all. You may be very much fearful about certain things but you don't want to disclose it to the others. So you know about it but the others don't know about it. That those areas they or those characteristics are in the hidden area, right? आई होप दैट इज क्लियर टू यू. अननोन एरियाज वो होते हैं, अननोन एरिया में क्या क्या होता है जो जिसके बारे में ना तो आप जानते हैं ना दूसरे जानते हैं. सो सिचुएशंस विच यू हैव नेवर एनकाउंटर्ड इन योर लाइफ, राइट? जैसे अगर अभी तक आपने जॉब नहीं किया है तो व्हेन यू विल बी इन अ जॉब, हाउ यू विल बी रिएक्टिंग टू द पीपल विद लाइक टू योर सुपीरियर और टू योर सबऑर्डिनेट्स. You at this point of time you can just think about it but you do not know about it because you've never entered into such a situation, right? So अब किसी भी नई टीम में या किसी भी नए, जैसे अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में आप लोग आए हो, आप लोग यू डोंट नो योर क्लासमेट्स एक्चुअली. सो यू आर नॉट वेरी क्लियर कि जिस दिन आप पहली बार आपकी क्लास फिजिकली लगेगी और आप सब लोग मिलोगे तब आप व्हाट विल बी योर रिएक्शन. You do not know. How will you be reacting to the others? You know each other, but only virtually. Many of you know each other very well because you know you have been in the same classes before also. But I hope you understand this. Unknown areas क्या होते हैं? ऐसी situations जो अभी तक आपने encounter नहीं की हैं, उसमें ना आप जानते हो कि आप कैसा behave करोगे, ना दूसरे जानते हैं कि आप कैसे behave करोगे. So these become a part of unknown area. So these are the 4 different areas which are represented in the Johari window, right? Now let us understand how this tool helps us, right? How this tool helps us to understand ourselves, how this tool helps to make better teams and all. So let us try to understand this aspect of Johari window. 4 panes can be changed in size. Hamish, this is what you were talking about. So I told you that just the next slide, we will start to talk about how these panes have to change their their sizes. So now in new groups or teams, think about it, the new groups, जितने भी नए ग्रुप्स बनते हैं या नई टीम्स बनती हैं, तो ओपन फ्री स्पेस फॉर एनी टीम मेंबर इज स्मॉल, राइट? जब भी कोई नई टीम बनती है तो किसी भी टीम मेंबर के लिए जो ओपन स्पेस, ये एक जोहारी विंडो एक पर्सन के लिए होता है, राइट? सो या फिर एक ग्रुप के लिए हो सकता है. राइट नाउ थिंक अबाउट इट एज अ पर्सन. सो जो भी एक पर्सन है
एक टीम का पार्ट है, जब भी कोई नई टीम बनेगी तो हर पर्सन के लिए जो ओपन एरिया है वो छोटा होगा, क्योंकि ना तो वो जानता है कि इस टीम में वो कैसे बिहेव करेगा, ना दूसरे उसके बारे में जानते हैं, दूसरे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं जानते, वो खुद भी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता है, क्योंकि लाइक in relation to this team. And so in new groups or in new teams, the open free space for any team member will be small. As the team member becomes better established and known, the size of the team members open free area quadrant increases. जैसे जैसे आप लोगों को जानने लगोगे, जैसे जैसे आपको लोग जानने लगेंगे, आप भी किसी एक टीम में ज्यादा टाइम तक रहोगे तो आपको भी पता है आप कैसे बिहेव करोगे. सो योर कैरेक्टरिस्टिक्स यू ऑल्सो नो, अदर्स ऑल्सो स्टार्ट टू नो, एंड सो योर ओपन एरिया जो है उसका साइज बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे टीम पुरानी होती जाएगी. Established team members logically tend to have larger open areas than new team members. सो टीम तो पहले से है, लेकिन अगर कोई नया एंटर होता है उस टीम में तो फिर उसका डेफिनेटली ओपन एरिया छोटा होगा. जो established members हैं उनका बड़ा होगा, because people already know about them, they also know about how they will be dealing with the other team members and their characteristics. So that is what happens in any of the teams. Now let us try to understand each of the areas, and then we'll also understand how these window panes can be changed with size. Open area अगर हम देखते हैं, the size of the open area can be expanded horizontally into the blind space. Some internet issue at my place. Yeah. So size of the open area can be expanded horizontally into the blind space. So think about it. Horizontally अगर हम extend करते हो open area को तो वो कौन सी space लेगा? Blind area वाली space लेगा. So horizontally into the blind space. कैसे हो सकता है? Blind space कम हो और open area बढ़े. वो कब होगा? Can somebody just think about it? This is what Hamish was actually talking about. कि blind area कम हो और ओपन एरिया बढ़े, वो कब होगा? ब्लाइंड एरिया का मतलब ये है कि आप अपने बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, दूसरे देख पा रहे हैं, राइट? और ओपन एरिया का मतलब आप भी जानते हैं, दूसरे भी जानते हैं. सो अगर आपको ओपन एरिया बढ़ाना है एंड बाय डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द ब्लाइंड एरिया, तो फिर क्या करोगे जिससे कि ओपन एरिया बढ़ जाए और ब्लाइंड एरिया कम हो? So आपको अपने बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए. Yes. Can I just ask Samiksha? Yes. I've unmuted you, Samiksha. Self-analyze yourself, take more opportunities where you understand yourself better, probably. Okay, so you're saying that, okay, trying to understand yourself better by taking up more opportunities, like picking up more opportunities. That is what you want to say? Yeah, probably trying to express yourself in different ways. Okay, okay. So when you, but let me again give this example to you. When you are expressing yourself more, you are letting yourself being known to the others more. Are you getting that? When you express yourself more, what is happening? You know yourself very well. By expressing yourself to the others, you are letting the others know you more. Yes? Instead of you knowing yourself more. So in like if blind area को कम करने का मतलब ये है कि आप अपने आप को ज़्यादा, दूसरे तो आपके बारे में जानते ही हैं. ब्लाइंड एरिया अगर बड़ा है इसका मतलब ये है कि दूसरे आपके बारे में ज़्यादा जानते हैं, आप अपने बारे में कम जानते हो. उसको सही करने के लिए, उसको ब्लाइंड एरिया को छोटा करने के लिए जिससे ओपन स्पेस बढ़े, क्या ज़रूरी है कि दूसरे भी आपके बारे में तो जानते ही हैं, आप भी अपने बारे में ज़्यादा जानने लगो. और वो कब पॉसिबल होता है? जब दूसरे आपको फीडबैक दें और आप उनका फीडबैक एक्सेप्ट करो. So you start to like learn more about yourself when you are ready to accept the feedback from the others. I hope this is making sense. Right? You do not know about yourself. Others know about you. So how will you come to know about yourself? When you are ready to understand from the others what's wrong with you or what is right with you. Right? So the size of the open area can be expanded horizontally into the blind space. मतलब blind space छोटा किया जाए और open space बड़ा किया जाए. वो कैसे होगा? Blind space छोटा तब होगा जब आप जो अपने बारे में नहीं जानते थे वो भी जानने लग जाओ.
तो फिर आप ओपन एरिया में आने लगोगे। जो अभी थोड़े टाइम पहले हमेश ने कहा था कि अगर हमें कुछ नहीं पता है अपने बारे में, दूसरे हमें बता देते हैं, तो फिर हम तो वो ओपन एरिया में हो गया ना, राइट। सो अगर इसी का मतलब है ओपन एरिया में लाने के लिए क्या करना है, हमें दूसरों से फीडबैक लेना है। सो यू आर सेइंग समथिंग? Miss, you are not audible properly. Okay. So some kind of an internet problem. Now I'm not seeing any internet issue right now. Am I audible now? Yes, ma'am. Okay. So how the open area can be reduced and blind area can be, open area can be increased and blind area can be reduced. Is that thing clear? कि blind area छोटा तभी होगा जब आप अपने बारे में ज़्यादा जानोगे। ब्लाइंड एरिया बड़ा होने का मतलब है कि दूसरे आपके बारे में जानते हैं लेकिन आप अपने बारे में नहीं जानते हो, right? That then blind area is more. How that will reduce? When others will also know about you, which they were already knowing, but you also know about yourself. And how can you know about yourself more? By letting the others tell you about yourself. So that is what is known as feedback solicitation. Okay, now the size of the open area can also be expanded vertically downwards. नीचे करने से भी open area expand होगा। जब हम नीचे करेंगे तो क्या है, hidden area छोटा हो रहा है। So hidden area को छोटा करने के लिए आप सोच के देखो क्या होगा। Hidden area का मतलब होता है कि आप अपने बारे में जानते हो लेकिन दूसरे नहीं जानते। उसको छोटा करने का क्या मतलब हुआ कि दूसरे भी आपके बारे में जानने लगे। आप तो जानते ही हो, दूसरे भी जानने लगे। सो दूसरे कैसे जानेंगे आपके बारे में? अभी जो समीक्षा ने अभी कहा था, बाय एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ मोर यू विल बी लेटिंग द अदर्स नो अबाउट यू। सो ऐसे में क्या होगा, फिर ओपन एरिया बढ़ता चला जाएगा, हिडन छोटा होता जाएगा, right? So the size of the open area can also be expanded vertically downwards into the hidden or the avoided space by the person's disclosure of information. When the person discloses about himself or herself, right? Disclosure of information, feelings, etc. about him or herself to the group and the group members. Does it make sense? क्या होता है, you all know very well. Blind area का मतलब है by seeking or soliciting feedback from the others, the aim should be to reduce this area. So blind area मतलब है where we do, like the others can see those characteristics in us, but we do not know. So others know us, but we do not know anything about ourselves or less about ourselves. That should definitely not be a case, क्योंकि ये unproductive है। अगर एक टीम में आपको नहीं पता है आप क्या कर सकते हो, या आपको नहीं पता है आपकी क्या वीकनेसेस हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, सो ये बड़ा अनप्रोडक्टिव सा माहौल हो जाता है, राइट? यू विल नॉट बी एबल टू एक्चुअली कंट्रीब्यूट मच टू द टीम देन। सो हर एक मेंबर का ब्लाइंड एरिया तो कम होना ही चाहिए। ब्लाइंड एरिया कम कैसे हो सकता है? बाय सीकिंग और सॉलिसिटिंग फीडबैक फ्रॉम द अदर्स। So जब आप पूछो दूसरों से कि okay, what is my if I'm not able to understand where I'm going wrong, so can you just let me know about it? When the others tell you about you, so that means when you are ready to accept the feedback from the others, you are reducing your blind area. Blind area is not an effective or productive space for individuals or groups. That's very clear. If you do not know about yourself, right, you cannot be a lot productive. Group members can help by giving sensitive feedback and encouraging the disclosure. राइट? सो अगर लोग आपको सेंसिटिव फीडबैक देंगे, अच्छी तरह से मतलब सोच समझ के फीडबैक देंगे, तो आप और आपको भी एंकरेज करेंगे डिस्क्लोज करने को अपने आप को, सो उससे आपका ओपन एरिया बढ़ेगा। फीडबैक शुड बी नॉन जजमेंटल। हाउ टू गिव द फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बिकॉज कई बार लोग जब फीडबैक देते हैं तो दे बिकम क्वाइट ऑफ लाइक क्वाइट एक्यूजेशनल, एक्यूज करने लगते हैं लोगों को, तुमको ये भी नहीं पता, तुम्हें ये नहीं आता है। सो फीडबैक शुड, गिविंग फीडबैक इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव इशू, right? So feedback should be given properly and in a non-judgmental manner. I think that makes sense. Okay, so blind area क्या होता है? You know very well. एरिया को avoided self भी कहा जाता है, facade भी कहा जाता है, something that can be used to hide. It includes sensitivities, fears, hidden agendas, manipulative intentions and secrets. ये इस तरह की चीजें जो हैं वो hidden area में आती हैं. This can be reduced by the process of disclosure. So hidden अगर एरिया है, आप जान के अपना कई बहुत सी चीज़ों को hidden रखना चाहते हो, that's not good for the team, right? Definitely there will be some certain aspects of your personality which you would like to keep hidden, and it is better if it is kept hidden. But
if there's a lot that you are hiding from the others, that is not the right, you may not be the right. An ability that is underestimated or untried, जो कभी आपने कभी ट्राई नहीं की है, तो दूसरों को भी नहीं पता है और आपको भी नहीं पता है उसके बारे में. A natural ability or an aptitude that an individual does not realize that he or she possesses. So something that you do not even know that you have, right? Even the others are not able to judge that you have because you've never entered into such a situation. That becomes the unknown area. Okay. सो ओपन एरिया थ्रू फीडबैक सॉलिसिटेशन, जो हमने अभी ब्लाइंड एरिया में शुरू में बात की थी, ओपन एरिया को बढ़ाया कैसे जा सकता है. एस यहाँ से जो यहाँ पे एक लाइन थी, उसको अगर हम राइट में करते हैं, इसका मतलब हम ब्लाइंड एरिया छोटा कर रहे हैं, ओपन एरिया बढ़ा रहे हैं. ये कैसे हो सकता है ब्लाइंड एरिया छोटा? जब आप दूसरों से फीडबैक लो तो आपको अपने बारे में ज्यादा पता चलेगा. सो वो आपके ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी इन द ओपन. और न्यू टीम मेंबर और अ मेंबर विद इन अ न्यू टीम, थिंक अबाउट इट. न्यू टीम मेंबर मतलब एक नए टीम का मेंबर, जो टीम अभी अभी बनी है उसके सभी मेंबर्स, और या फिर अ मेंबर विद इन अ न्यू टीम, राइट? सॉरी, आई टुक इट द रॉन्ग वे. एक टीम जो नई नई बनी है उसके जो मेंबर्स हैं उनके लिए भी ऐसा ही बना होता है, मतलब उनका जोहारी विंडो ऐसा होता है, क्योंकि ओपन एरिया बहुत कम होता है. अननोन एरिया तब सबसे ज्यादा है. ना आप किसी के बारे में जानते हो, ना आप अपने बारे में जानते हो कि इस टीम पे हाउ विल यू बी लाइक इन रिलेशन टू द टीम, हाउ विल यू बी रिएक्टिंग. सो कोई भी एक नई टीम में जितने भी मेंबर्स हैं उनका जोहारी विंडो ऐसा होता है. या फिर कोई ऑलरेडी स्टैब्लिश टीम है, उसमें कोई नया मेंबर आता है तो भी उसका जोहारी विंडो ऐसा होता है. दूसरों का अलग होगा लेकिन उसका ऐसा होता है. एक स्टैब्लिश्ड टीम मेंबर जो है, पहले से टीम बनी हुई है और उसमें एक स्टैब्लिश्ड टीम मेंबर है, पहले से जो मेंबर्स हैं उनका जोहारी विंडो ऐसा होगा जहां ओपन एरिया ज्यादा बड़ा होगा. राइट? व्हाई? बिकॉज they also know what they are capable of. They are very clear about their strengths and weaknesses, and the others also know about them because they have been a part of this team since long. This person has been a part of the team. So established, ये डरना मत, ये बहुत सिंपल है. जो हमने अभी तक पढ़ा उसी का एक ही डायग्राम में सब एक्सप्लेनेशन है, आप ये समझ सकते हो. known by self, like unknown by self, known by others, unknown by the others, right? That is what is that we had seen in the first one. Open area, blind area, hidden area, unknown area, क्या हमने पहले देखा था. ओपन एरिया को ब्लाइंड एरिया बढ़ाया कैसे जा सकता है, ब्लाइंड एरिया को कम करके, बाय फीडबैक सॉलिसिटेशन. So if you move this here, that means if the person starts to take feedback from the others, blind area छोटा होता चला जाएगा and open area बड़ा हो जाएगा. This one, right? Similarly, अगर आपको hidden area को कम करते हुए open area बढ़ाना है तो वो कैसे होगा? जब आप अपने बारे में दूसरों को बताओगे, self exposure और self disclosure जो भी आप कह सकते हो उसको, राइट? सो हिडन एरिया छोटा होता जाएगा और ओपन एरिया बढ़ता जाएगा. जब आप ये दोनों चीजें एक साथ कर रहे हो, मतलब जब आप फीडबैक सॉलिसिटेशन, आप दूसरों से अपने बारे में पूछ भी रहे हो और अपने बारे में दूसरों को बता भी रहे हो, तो इस केस में दोनों छोटे होंगे. यानी एक्चुअली क्या हो रहा है? शेयर्ड डिस्कवरी. दैट मीन्स you are discovering about yourself and you are also letting the others discover you. So उस केस में blind area, hidden area दोनों छोटे होते जा रहे हैं, unknown area भी छोटा होता जा रहा है और open area सबसे बड़ा होता जा रहा है. Right? That is what is the aim for any of the established teams.